Welcome back to this session. Today in this session we will be starting a new unit, and that is unit number 3, elastic constants. So before we start with the unit, let us cover some few topics that we have already covered in unit number 2. हम जो टॉपिक्स पहले हमने यूनिट नंबर 2 पे कवर किया है वो हम फिर से अभी कवर करेंगे so that it will be as a revision to you. So let us first start with the linear strain. So what is linear strain? If you read its definition, it says the strain in the direction of applied force. The strain क्या होते हैं? Strain is simply change in its length by its original length. और कहाँ पर बोल रहे हैं? In the direction of applied force. So let us look at this diagram here. So let us consider this to be a rod of length L. This is a rod of length L. अब ये rod पे पहले उस पे जब फोर्स नहीं लगाया था तो उसका लेंथ L था. अब जब यहाँ पर फोर्स लगाया है, और कौन से फोर्स लगाया है? फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, it is a tension force, right? So टेंशन फोर्स जब लगते हैं तो क्या होते हैं? एनी मटेरियल, द लेंथ ऑफ एनी मटेरियल विल इंक्रीज. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इनिशियली द लेंथ वाज L. अब जब आपने टेंशन फोर्स लगाया तो वहां पर देयर इज अ चेंज इन लेंथ. अब ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल लेंथ L से लेंथ इंक्रीज हुआ है, और कितने से इंक्रीज हुआ है? del L. तो ये आपका नया लेंथ आया. किसकी वजह से आया? आपने फोर्स जो लगाया इसकी वजह से यहाँ पर changes आया. So simply linear strain is that strain when the length of any material changes in the direction of applied force. अब यहाँ पर direction of applied force कहाँ पर है? ये यहाँ से if we imagine there can be a line of axis here, right? So यहाँ से हम line of axis draw कर सकते हैं यहाँ से, right? तो इसके एक्सिस से अभी यहाँ से x एक्सिस हुआ तो एक्सिस से यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो उसके वजह से जो भी आपका यहाँ से लेंथ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उसके वजह से जो भी आपका चेंजेस आएंगे लेंथ पे, that change in length divided by its original length is simply a strain, and that is also a linear strain. So it can also be called as linear strain, longitudinal strain, primary strain, or simply strain. Okay, and it is denoted by E here. It is denoted by E, and del L here signifies this length here. So what is this length? This is change in the length. And what is this L here? This is its original length. So this is the strain, or it is linear strain. So for lateral strain, हम जब linear strain पे, यहाँ पर ये डायग्राम पे देखो, जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो उसका यहाँ पर लेंथ L इंक्रीज हुआ है, right? But as you can see here in this portion here, क्या हुआ है? यहाँ पर उनका diameter, the diameter of this object has decreased. So when its length is increasing, its diameter here is decreasing. So this diameter here is the secondary length of this rod, right? So the changes in this diameter of this rod are known as lateral strain. So let us see its definition. This change in lateral dimension to the original lateral dimension is called as lateral strain or secondary strain. So what it is saying, see, for example, we have a box here. We have a box here. Now you're applying a force in this two direction. So what is this force produced here? That kind of force that is produced here because of this applied forces in this two direction will give you a tension. This whole box will be under tension, and its length here will increase. Now as जब ये इसका लेंथ इंक्रीज होते हैं तो इसका विड्थ और थिकनेस को क्या होते हैं? इसका विड्थ भी जो है ये डिक्रीज हो जाएगा और इसका थिकनेस भी कम हो जाएगा.
जब इसका लेंथ इंक्रीज हो जाते हैं तो changes in its length L is linear strain and changes in B and T जब B and T पे these two are secondary sides of this box तो जब B and T पे changes होते हैं उसको हम lateral strain बोलते हैं. Okay, so here lateral strain is equal to change in lateral dimension by original lateral dimension. So what is change in lateral dimension? So the change in lateral dimension, if you take its width here, it will be del B. Del B is the change in its lateral dimension and original dimension kya hai? Original dimension is B. So change in B, del B by B will give you lateral strain and del T by T will give you its lateral strain for its thickness. Okay, so here B and T are the lateral dimensions. Coming further for lateral strain, for a rectangular bar, the bar that you have seen previously in the diagram, their change in B divided by B is the lateral strain. Right? What is B here? It is its width of the rectangular bar, or if there is change in its thickness, change in thickness by its original thickness is also a lateral strain. Now, if the material is a circular bar, then the change in its diameter, the lateral dimension for a circular bar is its diameter D. So, जब diameter D पे change होते हैं, those changes are known as lateral strain. और वो lateral strain कैसे find करेंगे circular bar पे? It will be del D by D. Now, coming to Poisson's ratio. When a homogeneous material is loaded within its elastic limit, the ratio of the lateral strain to the linear strain is constant and is known as Poisson's ratio. अब Poisson ratio यहाँ definition पे क्या बता रहे हैं? जब कोई भी homogeneous material, what is homogeneous material first of all? The homogeneous material are those material which are made out of the same material. Okay, they are made out of the same. Homo means they are same. Okay, so this when the material which are made out of the same material is loaded within its elastic limit. अब elastic limit पे क्या होते हैं? Whenever you apply a force to a rubber, if it is still inside the elastic limit, and if you let it go, it can gain back its original shape. So elastic limit तक की that property will be retained. Now same rubber को आप ज़्यादा force लगा रहे हैं, तो elastic limit अगर cross हुआ तो plastic limit पे जाएगा और plastic limit पे क्या होगा? Permanent deformation आएंगे. So that is not a elastic limit. So elastic limit is that limit at which you apply a force, and as you release the force, the material will come back to its original shape and size. So here what it is saying, that any homogeneous material which is made out of the same material, same property of the material is loaded. जब उसको load मतलब force जब लगाते हैं, and if it is still inside the elastic limit, then the ratio of strain to the linear strain is supposed to be constant. उसका एक constant value आएंगे, और जो वो आएंगे constant है, that is known as Poisson's ratio. Okay, और ये Poisson's ratio को हम denote करते हैं with this symbol here, and this symbol here is known as mu. Okay, it is known as mu, or it can also be denoted with this second value here, which is 1 by m. Okay, now this value of m for many materials will lie between 3 and 4. तो आपको अगर कोई भी एक material का, एक metal का
m का वैल्यू दिया है और वहां से आपको m का वैल्यू से आपको पॉइजन्स रेशियो फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल उसमें 3.5 दिया है, तो 3.5 दिया है तो आपको म्यू फाइंड करना है. सो टू फाइंड म्यू आप फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू यहाँ पर लगा दो विच इज इक्वल टू 3.5, तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा. एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज पॉइजन्स रेशियो. ओके, so this Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to its linear strain. Okay, so lateral strain kya hai? Lateral strains are those strains where whenever there is changes in the lateral dimension. Or linear strain kya hai? Linear strain will always occur at its primary length, which is its length L of any material. Okay, so from this relation here, mu kya hai? Mu is Poisson's ratio. Poisson's ratio mu or 1 by m is equal to lateral strain by linear strain kiya to from this relation we can also find that lateral strain can be equal to mu, which is Poisson's ratio into E. E here is linear strain. तो आप ये म्यू का वैल्यू अगर नहीं दिया है, m का वैल्यू दिया है, तो यू कैन रिप्लेस म्यू विथ 1 by m and find the value of Poisson's ratio, and then you can find lateral strain. So next, what is the relationship between linear and lateral strain? It is very simple. जब कोई भी material is under the action of a tensile load or tensile force पे क्या होते थे? I've already explained that in tensile force एक material है, right? Let me take this material here. This material, अब इस पे मैं tensile force लगा रही हूँ, तो tensile force कैसे लगेंगे? मैं यहाँ से खींचूंगी ऐसे. जब इसको मैं ऐसे खींचती हूँ तो क्या होगा? The length of this material will increase. इसका length increase हो जाएगा, और जब इसका ये length increase होते हैं तो इसका ये width और ये thickness, कम हो जाते हैं, right? तो linear strain कहाँ पर आते हैं? Linear strain इसके तरफ से आते हैं, ये length, right? ये length की तरफ से आता है. जब इसका length increase हो जाते हैं तो इसका ये width और its thickness कम हो जाते हैं. तो क्या होते हैं? मतलब we can say that when the linear strain of any material increases, its lateral strains will decrease. It will be less. So here, when the material is under tensile load, linear strains are positive and lateral strains are negative. क्यों linear strains positive है? Because जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो लीनियर स्ट्रेन्स विल बी पॉजिटिव. क्यों होते हैं पॉजिटिव? क्योंकि इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है. जब लेंथ इंक्रीज होते हैं तो उसका लीनियर स्ट्रेन विल बी पॉजिटिव, और इसका लेटरल स्ट्रेन बी और डी कम हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका लेटरल स्ट्रेन्स विल बी नेगेटिव. ओके, सिमिलरली जब मैं ये मटेरियल को मैं कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाऊंगी, कॉम्प्रेसिव मतलब मैं इसको अंदर से पुश कर रही हूँ, तो मैं जब इसको अंदर पुश करती हूँ तो क्या होगा? इसका ये जो लेंथ है ये कम हो जाएगा, राइट? जब इसका लेंथ कम हो जाते हैं तो मतलब क्या हो रहा है? ये लीनियर स्ट्रेन नेगेटिव पे जा रहे हैं, राइट? कॉम्प्रेसिव से क्या होते हैं? उसका हमेशा लेंथ कम हो जाते हैं. तो व्हेन द लेंथ ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, linear strain will be negative and the lateral strain. अब जब इसका लेंथ छोटा होके जा रहा है तो ये छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ना, तो उसका ये lateral strains will be increasing. And वो lateral strains कहाँ पर आते हैं? Its width and its thickness. So its width and its thickness will be increasing. So that is the relationship between linear and lateral strain. तो जब आपका लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव होते हैं उस टाइम पे आपका लेटरल स्ट्रेन्स विल बी नेगेटिव, और जब आपका लीनियर स्ट्रेन्स आर नेगेटिव, lateral strains will be positive.
Okay, so here you can see lateral strains will be equal to minus mu times into E. अब ये कौन से कंडीशन पे है? म्यू को आपने माइनस किया है, ये म्यू क्या है? म्यू इज लीनियर स्ट्रेन. तो ये व्हाट कंडीशन, व्हाट इज दिस मटेरियल अंडर? दिस मटेरियल इज अंडर कंप्रेशन. जब कंप्रेशन पे क्या होते हैं? कंप्रेशन पे लेटरल स्ट्रेन्स पॉजिटिव होते हैं और लीनियर स्ट्रेन्स नेगेटिव पे होते हैं. सो दिस इज अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स. Now volumetric strain. This has also been covered already, volumetric strain. So volumetric strain पे क्या होता है? When any body is again within the elastic material or within the elastic limit is subjected to external forces on its faces, there will be change in its volume. मतलब जो कोई भी आपका एक इलास्टिक मटेरियल ले लो और वो इलास्टिक मटेरियल पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके फेसेस पे, तो जब आप उनके फेसेस पे फोर्स लगाते हो तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं ऑब्वियसली, राइट? तो जब उसका वॉल्यूम चेंज होते हैं, द चेंज इन इट्स वॉल्यूम बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम क्या कौन से होते हैं? जब आप कोई भी फोर्स नहीं लगाते हो उस टाइम पे उसका ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी रिटेन्ड. सो दैट ओरिजिनल वॉल्यूम change in volume by its original volume is known as volumetric strain. और उस volumetric strain को किससे डिनोट करते हैं? with this symbol here, which is EV. So here we have EV equals to del V. What is del V here? Del V here is change in its volume divided by original volume. Okay, और हम ये भी बोल सकते हैं जब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करना है, we can also find with this concept here, it is the algebraic sum of all axial or linear strain. तो क्या बोल रहे हैं? जब हम सब लीनियर स्ट्रेन के हम उसका एडिशन करेंगे, करके लेके जाएंगे, तो वो एडिशन से हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाते हैं. तो उसका एक्सप्लेनेशन फर्दर यहाँ पर दिया है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये EX here denotes change in its length. Okay, what is E? E is linear strain. So change in its length in X direction plus change in its length in Y direction plus change in its length in Z direction. अगर हम इसका सबका प्लस करते हैं तो that will be the volume. Okay, and जब आप सब डायरेक्शन का लीनियर स्ट्रेन का जो भी चेंजेस आते हैं उसको आप प्लस करते हो, that addition will give you volumetric strain EV. Now next we have the concept of uniaxial loading, biaxial loading and triaxial loading. So first let us understand what uniaxial loading means. Let us understand what uniaxial loading means. There is a lots of derivation in there. You don't need to study all those derivation. You just need to know कि uniaxial loading पे क्या होते हैं. So look in this diagram again. ये फिर से यहाँ पर rod है एक और उसका length L है. अब ये rod पे फिर से force P लग रहा है. वहां पर फोर्स P लग रहा है यहाँ से दोनों साइड से. अब ये फोर्स P कहाँ से लग रहा है? सिर्फ एक एक्सिस से लग रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी टू एक्सिस. लेट अस से यहाँ से x एक्सिस होंगे, राइट? यहाँ से y एक्सिस का होंगे एंड ये थर्ड प्लेन भी होगा जो z एक्सिस होगा. तो अभी ये रॉड के लिए कहाँ से फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, राइट? जो है एट x डायरेक्शन पे. सो जब भी कोई मटेरियल पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं तो वो उस टाइप ऑफ डायरेक्शन को हम यूनिएक्सियल फोर्सेस बोलते हैं. और जब कोई भी बॉडी यूनिएक्सियल फोर्सेस के अंडर होते हैं तो द बॉडी इज सेड टू बी अंडर द एक्शन ऑफ
यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो उस पे अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, so you need to find it by using this formula del V by V, which is volumetric strain equals to 1 minus 2 mu. So this is the formula that you need to remember. Although there is a long derivation, you don't need to study the derivation at your level right now. So directly remember this formula. अगर uniaxial loading लग रहा है, बोला है, and उसको आपको uniaxial loading के बाद कितना वॉल्यूम पे चेंज हुआ है वो फाइंड करने के लिए बोला है, तो you need to use this formula. Okay. Next we have biaxial system. Now in biaxial system what happens, यूनिएक्सियल पे अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा था तो बाईएक्सियल सिस्टम पे दो डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे. सो लेट अस से दैट द फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड द सेकंड फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम वाई डायरेक्शन. जब दो डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं उसको हम बाईएक्सियल लोडिंग बोलते हैं. ओके. और उसपे जब बाईएक्सियल लोडिंग के अंडर होते हैं कोई भी बॉडी, तो द बॉडी इज सेट टू बी अंडर अगेन बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम. और अगर आपको बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के फोर्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करना है तो द फॉर्मूला विल बी सिग्मा एक्स फोर्स हमने एक्स डायरेक्शन पे एक लगाया था, और जो फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुआ है एक्स डायरेक्शन पे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई फोर्सेस जो भी आपने वाई डायरेक्शन पे लगाया है और जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई divided by E. Now what is E? E is Young's modulus into 1 minus 2 mu. So this formula here will give you the volumetric strain for a body that is under biaxial loading system. Is it clear? I hope it is clear. So next we have triaxial loading system. Now again in triaxial loading system, the concept is that in tri means three, right? Three. Now triaxial. So तीनों axis से forces लग रहा है. So we have forces in x direction, forces in y direction, and forces in z direction. जब तीनों direction से forces लगते हैं और जो forces की वजह से stresses produce होते हैं, तो the forces that has been applied on a body in all three directions are known as triaxial loading system. और triaxial loading system की वजह से stresses जो produce होते हैं, those stresses are known as triaxial stress system. Okay, the body which is under triaxial loading, and because of this triaxial loading, triaxial stresses will be produced. And again, अगर आपको फिर से triaxial system पे जो भी forces लगा है उसके वजह से अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला. Stresses produced in all three directions because of forces applied in all three directions, that is the addition of all these three stresses divided by E into 1 minus 2 mu. तो अगर वो करते हो तो you will get the volumetric strain. Now next we have modulus of elasticity or Young's modulus E. This is very simple. We have been using the value of Young's modulus in previous unit to do our calculations, right? So
Young's modulus is nothing but it is the ratio of stress to strain, right? जब भी कोई भी मटेरियल हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोड करते हैं तो वो लोड की वजह से जो लोड लगाया है उसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट ओनली, स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं और स्ट्रेसेस की वजह से जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं उन दोनों का आपने रेशियो लिया तो दैट कांस्टेंट, जब आप रेशियो लेते हैं और रेशियो से आपको कांस्टेंट मिलते हैं, सो दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट विथ द सिंबल E here, right? E here equals to the ratio of stress divided by strain produced in a material that is loaded within the elastic limit. Okay, now here from this relation, ये relation से अगर आपको if you need to find stress, so the stress will be equal to constant. So what is this constant? This constant here is Young's modulus E into E. Now what is this small e? Small e is strain. Okay, so the ratio of stress to strain is equal to constant. So I hope this is clear. Now next we have bulk modulus. Bulk modulus क्या है? जब भी आप कोई भी बॉडी को तीनों डायरेक्शन से एक सेम लोड लगाते हो, मतलब इसका मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन पे भी आपका इमेजिन दैट देयर इज अ बॉक्स, सो इन दैट बॉक्स थ्रू वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन यू अप्लाइंग 10 kilonewton force, and in y direction you applying 10 kilonewton force, and in z direction also you applying 10 kilonewton force. Now because of this same forces in all these three directions, a same intensity of stresses will be produced, and this same intensity of stresses will be the direct stress produced in the body. Because क्यों direct stress है वो? क्योंकि वो जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुआ है तीनों डायरेक्शन पे वो सेम इंटेंसिटी का है, क्योंकि फोर्सेस जो लगा है सेम फोर्सेस लगा है और सेम फोर्सेस की वजह से सेम स्ट्रेसेस देंगे, तो उसका इंटेंसिटी ऑल थ्री डायरेक्शन पे सेम होगा, राइट? तो उसकी वजह से यू गेट अ डायरेक्ट स्ट्रेस. नाउ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करते हो, देन दैट टाइम यू गेट अ बल्क मॉड्यूलस. और आपको bulk modulus is signified with a symbol K. Okay, so here direct stress here is signified by a symbol sigma, divided by volumetric strain is change in volume by original volume. अब ऐसे करके भी आपको bulk modulus मिलेगा. Okay, so let me read its definition here. When a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of same intensity, then the ratio of direct stresses and the corresponding volumetric strain of the body is constant and is known as bulk modulus. Okay, it is denoted by K. तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बोल रहे हैं. जब भी तीनों डायरेक्शन से सेम स्ट्रेसेस आते हैं तो सेम स्ट्रेसेस विल बी ऑफ सेम इंटेंसिटी. अगर वो जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं अगर वो सेम इंटेंसिटी का नहीं है तो वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं होगा. ओके, तो अगर पूरा डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन से सेम इंटेंसिटी का आ रहे हैं स्ट्रेसेस, तो दैट डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब स्ट्रेसेस की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम पे चेंजेस तो आएंगे, राइट? तो जो वॉल्यूम पे चेंजेस आ रहे हैं उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं. तो डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करने से आपको एक कांस्टेंट मिलते हैं और वो कांस्टेंट को हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं. ओके, व्हिच वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हियर. So I hope this is also clear. Next we have modulus of rigidity.
Now this modulus of rigidity is the ratio of shear stress by shear strain. ये भी हमने cover किया था पिछले यूनिट पे, right? और हम modulus of rigidity को we signify it with symbol G, C or N. Here I have written small c and small n. It should be capital C or capital N here. Okay. So now, the most important part. You know what is modulus of elasticity. You know what is bulk modulus. You know what is modulus of rigidity. अब इन तीनों पे relationships आते हैं. There will be relationships between modulus of elasticity, bulk modulus, modulus of elasticity and modulus of rigidity, and इन तीनों के बीच में तीनों का होते हैं. तो first relationship is in between modulus of elasticity. Modulus of elasticity is denoted by a symbol E or bulk modulus K. अब इन दोनों के बीच में relation is E equals to 3K 1 minus 2 mu. Now what is this mu here? Mu here is Poisson's ratio. Now you need to remember this formula in order to solve the numerical. Okay. Now next relationship between modulus of elasticity E and modulus of rigidity, which is denoted by G, C or capital N. Okay. तो यहाँ पर G लिया है. ये G क्या है? It is modulus of rigidity. Now this modulus of rigidity, the relationship between these two is E equals to 2G 1 plus mu. Okay. अगर आपको modulus of elasticity find करने के लिए बोला है और modulus of elasticity का वैल्यू वहां पर नहीं देंगे, अगर आपको modulus of elasticity find करने के लिए बोला है, तो then modulus of rigidity value will be given to you and Poisson's ratio. So putting the value of all these things, you can get modulus of elasticity. Similarly, the same thing can be in here. Okay. So now the third relationship is in between modulus of elasticity, bulk modulus and modulus of rigidity. Now ये तीनों के बीच में relation जो है, it is symbolized with this formula, which is equal to E equals to 9 kg divided by G plus 3k. Okay, so this is the relationship between all three terms, that is modulus of elasticity, bulk modulus and modulus of rigidity. Now यहाँ पर मैंने दिया है E is modulus of elasticity, K bulk modulus है और G modulus of rigidity है. So with this we come to an end of this session. I hope this session is clear, and please keep all those formulas that we have covered in this lecture ready so that we can use this same formula to solve the numerical in next session. See you in next session.